जहां जेल चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत के बेसमेंट में आग लग गई है। इमारत में बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी कायम है। इमारत में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से। तो साद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या लोगों को निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जेल चौरंगी के करीब एक रिहायशी इमारत है जिसकी बेसमेंट में आग लगी है। जो इमारत की बालाई मंजिलें हैं वहां पर फ्लैट्स में रिहाइश पजीर हैं बड़ी तादाद में लोग, जबकि जो निचली मंजिलें हैं वहां पर एक सुपर मार्ट बना है, उसकी बेसमेंट है जहां पर अचानक से आग भड़क उठी है। इत्तला पर फौरी फायर ब्रिगेड की जानिब से 10 गाड़ियां रवाना की गई हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि बेसमेंट में लगी जो आग है उस पर काबू पाना अगरचे मुश्किल होता है, पर 10 गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। जो मार्ट का बेसमेंट है जहां आग लगी है वह ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, ग्रोसरीज के आइटम्स होते हैं। वहां से इस वक्त बड़ी तादाद में जो लोग थे इमारत के, उन्होंने बहुत शुक्रिया साद साबरी, अपडेट कर रहे थे आप। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Very important business forum of date, and I had the honor and pleasure to meet most of you during my previous visit to this great brotherly country. And today is a time when the entire world is passing through very difficult challenges as a result of COVID and then this ongoing war and of course other difficulties. And as they say, when the going is tough, I have amended this quote, then the tough gets tougher. So I think this is what we should be doing today. We had a great get-together last night where we had very frank discussion. And obviously I'm not going to repeat what I said last night. Suffice it to say that we are here to convey this message to our Turkish brothers and sisters. President Tayyip Erdogan and his team, and to Turkish business community, that we genuinely and seriously want to work with you, not only to further strengthen our brotherly relations that has taken care of itself from centuries. What is very important at this point in time is to transform this brotherhood and fraternity into promoting our trade, investment, and cultural relations. And it's not difficult. Even though we don't speak the same language, but we come from the same religion. Even if we don't understand Turkish or Urdu extensively, but we come from the same culture. And we have shared history. And we have been partner with each other, supporting each other through thick and thin. And it is a matter of record that in contemporary history, I have received hundreds of Turkish businessmen from 2008 to 2018. And also your active participation in investments in Pakistan is highly appreciated. And above all,
your contribution in humanitarian projects in Pakistan is very well known. I said this last night, and even at the cost of repetition, that the entire population of Pakistan witnessed your great efforts during earthquake, during floods, led by my brother, Excellency President Tayyip Erdogan himself and the First Lady. Today, we are here to seriously engage ourselves with you because you are very serious-minded business people and your achievements are outstanding. It's a shining example for all of us. I wouldn't want to take more time because we are going to listen to you today. But let's do 3, 4, 5 things so that we are able to achieve our targets. Pakistan has a buoyant automotive industry, and yours is far superior, no doubt about it. But then it's a question of competition, and in order to promote our sales, not only between two countries to third countries, let's collaborate and cooperate. For example, in your automobile industry, as I said, your quality is second to none. You are exporting to Europe, so those standards have to be met. But what we can do is, through mutual agreements, manufacture parts and components of automobiles at lower cost because your labor is very expensive. Ours is still comparatively cheaper. So we can have this wonderful win-win collaboration in this automobile industry. And then, of course, you produce your own grain and you are self-sufficient in wheat, we know that. But your textile industry is again, very strong. Pakistan textile industry is also, very rich in experience, and we have, great giants sitting here on the right side who are leaders of textile industry. So again, there can be, space and gaps to be filled by joint cooperation in textile, for example. Without going into details, this is again a win-win, collaboration between two brotherly countries. And then you are far ahead of Pakistan. In fact, you are one of the world's leading country in building dams, hydel power generation projects, and then renewable energy. We discussed Zolo last night. So your capacity to build dams and hydel power generation should be leveraged by us in Pakistan. So you will invest money, get profits, and we get cheap hydel power electricity. This is a great vision which we must, actualize through joint discussion and quick decision. Similarly, in renewable energy, we have great potential in Sindh, in Balochistan, in KP, and in Punjab. Like wind power
generation. Already Turkish companies, as I speak, we know, are already active in Pakistan, in Sindh, in Punjab. And let's promote this, solar energy and wind power for two reasons. A developing country like Pakistan cannot afford prohibitive bill of billions of dollars to finance our very expensive oil and gas and other related items. We cannot. So we have to replace our import of raw material by, enlarging the scope of hydel power generation and renewable energy. And this is, a wonderful combination. Great investors are sitting here on my left, experts and experiences with you. Please come to Pakistan, and all our cascade from Diamir Bhasha down to Tarbela Dam and Mangla is full of potential of 40,000 megawatts. 40,000 megawatts. And this will have two wonderful impacts. That it will control flash flooding. It will definitely be very helpful, because once you have such floods, it is devastating, and we have seen in 2010. And two, exploit these great potential points and convert them into energy. So, how to go about? These are a matter of details. This late morning, I am just trying to, elaborate broad parameters of our future cooperation, which must be kick-started before I finish my humble, comments. And three, you will have profits, and we will have these great advantages, including, restricting desiltation process through this investments from north to south. So I think these are some broad areas where our cooperation can be very, very productive and profitable. Yesterday I met this young gentleman from Zulu. He is now bearded. I took some 20 seconds to recognize him, and so he's here. And they have been very keen. They have invested in sand and in wind power, and they were very keen to invest in solar. Finally, this moment has come, and all hurdles have been cleared. So what I'm saying is that these are milestones to be achieved. Only then will this have a semblance of reflection of our brotherly relations, which are very genuine. They're not artificial. A taxi driver here in Ankara or in Istanbul, or in Lahore, in Karachi, or Peshawar or Quetta, once he knows that a Turk brother is sitting in his taxi, he will say, I will not charge you, as they would not charge in Istanbul or in Ankara. Or somebody sipping coffee in a Turkish coffee shop, once he knows that he's from Pakistan, they will say, thank you, you are a brother, Kardesh. So I think this is what the spirit is all about. And it is not from today or yesterday, it is from centuries, my brothers and sisters. So I am here today with my great team, on left and right, and of course on this right side, on the left side, to convey this message to you in no uncertain terms, and absolutely, loud and clear, that I will be, along with my colleagues, we will be, welcoming you with both arms to come and invest in Pakistan, promote trade, and, through innovative measures, through modern technology and modern skills. We have a very
young population, 60% of our population, span from, from 15 years to 30 years. And it is a big challenge. But according to this Chinese time-tested quote, a challenge has always with it, opportunities. So, this young generation in Pakistan, boys and girls, we can, and I offer this, great, opportunity here, that let's train them with modern skills and technology, IT-led technology, so that they are empowered, and then they become great, leaders of Pakistan. And today, I'm telling you that our neighboring country, India, their IT field exports something like $200 billion worth IT products, and ours is just $1.5 billion. It's a shame. So I think this is again a great, opportunity for us to collaborate, and we have now a sizable base of IT, knowledge in Pakistan, but this needs to be, further multiplied, manyfold. So this is again a great area of cooperation. Similarly, agriculture, dairy farming. I know a project is coming up in Lahore through joint venture. Mia Mancha, I think he's putting up a dairy farm with Turkish, collaboration. So all this is very well, very good. But then it is not enough. Rather, it's very, it's insufficient and does not reflect our brotherly relations. So let's resolve today. I've requested my brother, Trade Minister, that before we conclude this meeting, you must sign a letter of intent that yes, through our untiring efforts, we shall achieve a bilateral trade figure of $5 billion in 2 years to come. Difficult, but not impossible. Nothing is impossible in this world, provided we have the will to do. Honorable Foreign Minister has reminded me of this visa issue, and I want to tell you, categorically that we will, inshallah, resolve this issue, and visa will not be an obstacle. Rather, we will have this visa turn into visa, where we all earn and spend. So let's do this in a manner which is befitting and mutually beneficial. At the end, I'd like to quote Iqbal's part of his stanza, which is very relevant in this day and age for both of our countries. Jahane taza ki hai, afkare taza se namood. Jahane taza ki hai, afkare taza se namood. Ke sang o khish se hote nahi jahan paida. Ke sang o khish se hote nahi jahan paida. Ke modern societies, innovative world and progressive societies, prosperous societies are not built through building palatial buildings and houses. If palatial houses were to be the hallmark of modern societies, then let me confess and admit we have, such, fantastic buildings in Islamabad, in Lahore, in Karachi, in Quetta and Peshawar. But that's not how, modern societies are built. Iqbal says, कि संगो खिच से होते नहीं जहाँ पैदा. Through marble and brick and mortar, you can't build modern societies. It is only through innovation, through modern techniques, through knowledge, through hard work, through untiring efforts, through sacrifice, which you have done and which we must do. And together we will, inshallah, achieve our position in the community of nations. Thank you very much.
Allah bless you. And Turkey Pakistan dosti zindabad. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्क पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के ख्वाह है। पाक तुर्क दोस्ती को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। दोनों ममालिक में तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं। हमारी ज़बान अलग है लेकिन हमारा कल्चर एक है। तुर्की ने सैलाब और ज़लज़ले में पाकिस्तान की बहुत मदद की। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तुर्की की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहता है। एक मरतबा फिर से आपको अपडेट करेंगे। कराची में जेल चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत के बेसमेंट में लगने वाली आग को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया है, जिसके बाद शहर भर के फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग डिपार्टमेंटल स्टोर के वेयर हाउस में लगी है। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया है। शहर भर से फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया है। शदीद धुआं है और यही वजह है कि फायर फाइटर्स को आग बुझाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। पुलिस के मुताबिक डिपार्टमेंटल स्टोर का अमला और ख़रीदार महफूज है। मुतासरा स्टोर में किसी शख्स की मौजूदगी की इत्तला नहीं। तो ये इस वक्त हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि किस कदर ये शदीद आग है और धुआं किस कदर शदीद है और ऐसे में फायर फाइटर्स को आग बुझाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। और इसके अलावा ये जो आग लगी है रिहायशी इमारत है, इसके बेसमेंट में आग लगी है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग डिपार्टमेंटल स्टोर के वेयर हाउस में लगी है और जबकि तीसरे दर्जे की आग इसे करार दिया गया है। शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, क्या किया जा रहा है फिर इस आग को काबू पाने के लिए? और आप जिस तरह से बता भी रहे हैं कि वहाँ पर लोग भी मौजूद नहीं है, ये एक अच्छी इत्तला है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जेल को चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत है जिसके निचली मंजिलों पर डिपार्टमेंटल स्टोर है। उसकी बेसमेंट में ये आग भड़की थी। 10 गाड़ियां फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की जानिब से रवाना की गई थी। इस वक्त जो आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। अच्छी इत्तला यह है कि वहां पर जितने भी लोग थे उनको फौरी तौर पर बाहर निकाल दिया गया था, रेस्क्यू कर लिया गया था। जबकि एक शख्स वहां पर ऐसा मौजूद था जिसे बेसमेंट में लगी हुई आग का जो धुआं था उससे वो शदीद मुतासिर हुआ था। उसे एबी के जरिए फौरी जो है तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड इंतजामिया का ये कहना है कि ये तीसरे दर्जे की आग है। सारे जितने भी फायर टेंडर्स हैं शहर भर के, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। इजाफी इमदादी गाड़ियां भी मंगा ली गई हैं और इस वक्त आग बुझाने की जो है वो हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है। बेसमेंट में जो आग लगी थी उसकी वजह से रिहाइश पजीर फ्लैट्स में जितने भी अफराद थे वो उन्होंने भी नकल मकानी शुरू कर दी थी और वो भी बाहिफाजत तरीके से अपने घरों से बाहर आ गए थे। जबकि जो सुपर स्टोर के अंदर, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो कस्टमर्स थे, बड़ी तादाद में, ये पीक आवर होता है इस वक्त, बड़ी तादाद में वहां पर शहरी शॉपिंग के लिए आते हैं, उनको भी बाहर निकाल दिया गया था। इस वक्त अच्छी इत्तलात ये आ रही है कि किसी भी किस्म का वहां पर जो है वो कोई भी अफराद मौजूद नहीं है। अफराद जो है वो अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन आग काफ़ी ज़्यादा है साथ साबरी और धुआं काफ़ी ज़्यादा है। और इत्तलात कुछ ऐसी भी है कि एक शख्स की हालत गैर हो गई है जिसे जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से भी बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जब अभी बात हुई रेस्क्यूदारों से तो उनका ये कहना था कि एक शख्स जिसे जब रेस्क्यू किया जा रहा था उसे बाहर निकाला जा रहा था, जो अंदर धुआं मौजूद था उसकी वजह से उसकी हालत गैर हो गई थी। नीम बेहोशी की हालत में वो शख्स था जिसे इस वक्त ईडी एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जहां पर उसे फौरी तिब्बी इमदाद दी जाएगी। बाकी जितने भी अफराद बेसमेंट में या उससे ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। साथ अपने नाजरीन को बताएं कि कराची जेल चौरंगी पर वाक़ डिपार्टमेंटल स्टोर के बेसमेंट में लगने वाली आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर है फिरोजाबाद की अस्मा बतूल, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि स्टोर में कोई शख्स मौजूद नहीं है और ना ही कोई जानी नुकसान हुआ है। आपको ये बताएं कि कराची जेल चौरंगी पर वाक़या डिपार्टमेंटल स्टोर की बेसमेंट में लगने वाली आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद अस्मा बतूल का क्या कहना है, अपने नाजरीन को सुनवा देते हैं। जेल इंतजामिया से हम लोग उन्होंने यही बताया है कि अभी तक इसके अंदर कोई भी हमारा बंदा मिसिंग नहीं है। एक बंदा था जिसको निकाल लिया गया। इसके अलावा कपड़े के गोदाम में आग लगी हुई बेसमेंट में, उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, मगर धुआं इतना ज्यादा है कि अभी तक कुछ आइडिया नहीं हो रहा है कि किस किस्म की कितने डिग्री की आग है और क्या पोजीशन है। इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई की है, क्या इमारत को खाली करवा ली है? जी, इमारत में ऊपर धुआं जा नहीं रहा फिलहाल। बाकी जो है हमने जितने भी सेफ्टी मेजर्स थे वो ले लिए हैं। अभी तक कोई माली जानी नुकसान जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ।
इस हवाले से आपको अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है आइंदा इंतखाबात के लिए इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से लाहे अमल तय करेंगे। जमीयत अहले हदीस के सरबराह सेनेटर साजिद मीर ने नून लीग के कायद से मुलाकात की है। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को मसाइल की दलदल में फंसा दिया है। महंगाई और बेरोजगारी के तूफान की जिम्मेदार इमरान हुकूमत है। पीडीएम की तमाम जमातों के इश्तराक से मुल्क को बहरान से निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मसाइल का हल अकेले एक जमात नहीं निकाल सकती, विरसे में मिले मसाइल को हल करने में वक्त लगता है। प्रोफेसर साजिद मीर ने नवाज शरीफ की जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए खिदमात को भी सराहा। इलेक्शन का ऐलान किया जाए, हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बैठने को तैयार हैं, मुज़ाकरात के जरिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान नहीं रहे। आप सबसे पहले इलेक्शन की तारीख दें, इलेक्शन का शेड्यूल दें, हम उसके लिए बिल्कुल नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, उनके साथ बैठेंगे। तो हमको मिलिटेंट पार्टी नहीं है, ना ही हम होना चाहिए, और इसीलिए हम मुज़ाकरात के जरिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और देखें, इस मुकदमे को कंक्लूड करें। आपने जो भी फैसला करना है, अदालतों को फैसले फिर आप माइंड भी कर जाते हैं जब हम कहते हैं कि आधी रात को अदालतें खुलती हैं। एक पार्टी के लिए आप जो है वो 5-5 दिनों में फैसले होते हैं, सारी रात भी खुल जाते हैं, 12 बजे भी पटिशनें एंटरटेन हो जाती हैं, और दूसरी पार्टी आपके सामने खड़ी हुई है, सामने सामने वायलेशन है, आप तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान ने हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि हमारे फैसलों से कोई नाराज़ या खुश होता है तो होता रहे, बगैर किसी दबाव के फैसले करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। अगर पीटीआई के इस्तीफे मंजूर हुए तो ज़िमनी इलेक्शन होगा। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है जुल्फ़िकार इकबाल ने, आपको दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन की तश्कील मुकम्मल हो गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाबर हसन बरवाना और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान से हल्फ लिया। तकरीब में इलेक्शन कमीशन हुकाम के अलावा मेंबरान के अहले खाना ने भी शिरकत की। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दो टोक कहा कि आइन के मुताबिक चलते रहेंगे, फैसले किसी खौफ और दबाव के बगैर करते हैं और करते रहेंगे। उनसे कोई खुश या नाराज होता है तो होता रहे। सिकंदर सुल्तान राजा ने ये भी बता दिया कि कासिम सूरी ने किसी रुकन असम्बली के इस्तीफे का केस नहीं भिजवाया था। अगर पीटीआई के इस्तीफे मंजूर हुए तो ज़िमनी इंतखाब होगा। इस हवाले से आइन बहुत वाज़ेह है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था इंतखाबात कब होने हैं ये फैसला हुकूमत ने करना है। मर्दमशुमारी नताइज शाया होने तक हल्का बंदी नहीं हो सकती। 31 दिसंबर तक डिजिटल मर्दमशुमारी नताइज शाया न हुए तो अक्टूबर 2023 में इंतखाबात मुश्किल हो जाएंगे। फिर दस्तयाब हल्का बंदी पर ही इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन पेशावर में अफसरान ने नौकरियों की लूट से लगा दी। मेरिट का उसूल पैरों तले रोंद कर मुलाजमतें अपने ही खानदान में बांटी गई। मुलाजमतों की बंदर बांट 2019 और 20 के दरमियान की गई। समा ने खोज लगा डाला। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल जाहिद गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा कि ये तमाम मुलाजमीन अफसरान की नवाजिशात पर भर्ती हुए हैं, क्या ऐसी इतलात हैं? रिकॉर्ड ये बता रहा है कि 2019 और 20 के अवाइल में जब उस वक्त सूबे के इलेक्शन कमिश्नर पीर मकबूल अहमद थे, ये भर्तियां की गई हैं। 51 मुलाजमीन को वहाँ पर भर्ती किया गया था। और सबसे अहम बात यह है कि जो रिकॉर्ड है पार्लिमानी अमूर की वजारत के ज़राए से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए से हमने जो हासिल किया है, उससे ये बात सामने नज़र आती है कि जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल इस्लामाबाद शमशाद खान ने अपने बेटे को भर्ती करवाया है। फिर डिप्टी डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़हूर शाह हैं, उन्होंने भी अपने बेटे को वहाँ पर नौकरी दिलवाई है। इसके अलावा खैबर डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन ऑफिसर थे हामिदुल्लाह, उन्होंने अपने भतीजे को नौकरी दिलवाई है। कुछ और अफसरान ने भी अपने भतीजे, भांजे या दूसरे अजीज़ व अकारिब हैं जिनको ये नौकरियां दी गई हैं। कम से कम 18 ऐसे हुकाम हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने अपने ख़ानदान से ही मौजूद लोगों को ये नौकरियां दिलवाई हैं। और ये सब कुछ हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेशावर का जो ऑफिस है, वहाँ पर ये भर्तियाँ की गई हैं।
अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस खबर पर आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बात हुई है, क्या मौक़िफ़ आया उनका? देखिए, इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम हैं, आला हुकाम, उनसे ज़रूर मैंने रब्ता किया था कि वो अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो खैबर पख्तूनख्वा है उसने ये भर्तियां की हैं बड़ी तादाद में, और अजीज़ व अकारिब का जो रिकॉर्ड सामने आया है कि उनको भर्तियां दी गई हैं, और ये ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन को नौकरियों पे रखा गया है। और ये बिल्कुल उसी वक्त हुआ है जब उस वक्त के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो मौजूद थे, उनके आखिरी महीने चल रहे थे अपना टेन्योर पूरा करने में, और फिर कुछ चंद भर्तियां जो हैं वो जनवरी 2020 में भी हुई हैं, जो रिकॉर्ड शो कर रहा है आयन उस वक्त जब मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओहदा संभालने वाले थे। उन्होंने ये भी बताया है कि तहकीकात वो कर रहे हैं, इस अकरबा परवरी की जो मुबैना तफसीलात सामने आई हैं तहकीकात में देखा जाएगा कि कौन मुलव्वस हैं, जबकि रिकॉर्ड ये बता रहा है कि सीनियर अफसरान ने अपने बेटों, भतीजों और मुख्तलिफ लोगों को यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेशावर में नौकरियाँ दी हैं। जी ठीक है, जाहिद गशकोरी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास जारी है। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और आला हुक्काम शरीक हैं। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी इजलास में शरीक हैं और इसके अलावा 9 नकाती एजेंडा जो है उस पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास जारी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं फातिमा शराजी से। जी फातिमा, आगाह कीजिए। आज वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास जारी है। इस इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और आला हुक्काम शामिल हैं। इसके अलावा जो सूबाई वज़ीर मलिक अहमद हैं वो वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शामिल हैं। इजलास में 9 नकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो बजट आ रहा है, तो उस हवाले से अवाम को किस हद तक जो है वो वज़ीर आला हमजा शहबाज रिलीफ दे सकते हैं, इस हवाले से मुशावरत की जा रही है। दूसरा, रमजान पैकेज के हवाले से जो रमजान में पैकेज दिया गया था लेकिन उसकी मंजूरी नहीं हुई थी, तो उस रमजान पैकेज की मंजूरी भी आज इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया फातिमा शराजी आपका। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हो गया है। मई में महंगाई 0.44% इजाफे से 13.76% तक पहुंच चुकी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं शकील अहमद से। तो शकील अहमद, बताइएगा क्या कुछ महंगा हुआ है? देखिए, 13.8% जो महंगाई है ये 28 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। जनवरी 2020 के बाद ये बुलंद तरीन शरह है। तो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो जो महंगी हुई हैं, जिनमें खुराक है और ट्रांसपोर्ट है। खुराक जो है और मशरूबात तकरीबन 17% से ज़्यादा महंगे हुए हैं। ट्रांसपोर्ट किराए 32% से ज़्यादा बढ़ गए हैं एक साल में। सेहत की सहूलियात भी 10.5%, तालीम और इसके अलावा तफरीही सहूलियात, रेस्टोरेंट चार्जेस और ये तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं। पिछले माह का अगर जायजा लें तो उसमें भी मुतअद्दिद ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमतों में इजाफा देखा गया है। जैसे अप्रैल में मई में जो प्याज है 36%, चिकन 17%, और इस तरह अंडे 13% महंगे हुए हैं। गंदम का आटा भी 10.5% महंगा हुआ है और दालें भी महंगी हुई हैं। तो ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से महंगाई मुसलसल ऊपर जा रही है। महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 28 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बहुत शुक्रिया शकील अहमद, अपडेट किया आपने। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।